Hello guys, welcome to Catch My Game. This is our ninth edition for the day 8th of Qatar World Cup 2022. मैच डे 3 शुरू हो चुका है। पहले जो दो मैचेस थे वो थे नेदरलैंड्स कतर और इक्वाडोर वर्सेस सेनेगल। हम दोनों मैचेस देख रहे थे, बट जो वॉल्यूम ऑन था वो नेदरलैंड्स और कतर वाले मैच का था। पता नहीं क्यों मैंने एकदम से ऐसे वॉल्यूम तेज करा सेनेगल और इक्वाडोर वाले मैच, एंड क्या एटमॉस्फेयर था उस मैच का। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर इन द वीडियो, बट लेट्स टॉक अबाउट द वेरी ऑब्वियस मैच दैट वाज गोइंग ऑन, नेदरलैंड्स वर्सेस कतर। नेदरलैंड्स पहले से क्वालिफाइड थी, नेदरलैंड्स को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो हारती भी दे विल स्टिल एंड अप ऑन सेकंड पोजीशन। सो नेदरलैंड्स के लिए जीतना इंपॉर्टेंट नहीं था। वैसे तो कतर के लिए भी कोई इतना मैटर नहीं करता बिकॉज दे वर आउट ऑफ द लीग, बट स्टिल नेदरलैंड्स won the match by 2-0. And Pulkit, what do you have to say? I think your verdict is right. स्टार्टिंग से ही बहुत सो मैच था ये। पहले के 15-20 मिनट दोनों टीम्स ने प्रेशर अप्लाई किया, उसके बाद नेदरलैंड्स अपने यूजुअल टैक्टिक्स पे आ गए, साइडवेज टिकी टाका और पोजेशन फुटबॉल। तो फाइनली कोडी गैक्पो को पहले ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद फ्रैंकी डियोंग का गोल, जो कि पहला गोल जो गैक्पो का था वो 25th मिनट में था और सेकंड गोल जो था वो फ्रैंकी डियोंग का था 49th मिनट में हाफ टाइम के बाद। तो आई थिंक दोनों गोल्स डिजर्व थे। यू कैन नॉट डिबेट एनीथिंग अबाउट इट। कतर दे वर नोवेयर नियर द लेवल्स। अगर वो हार्ड वर्क डाल भी रहे थे तो इट डिड नॉट मैटर बिकॉज नेदरलैंड्स हैड टू मच क्वालिटी इन द स्क्वाड। सो आई डोंट थिंक कतर हैड दिस बाय अ लॉन्ग शॉट। So I think it was a fair result in the end. हाँ, वन साइडेड मैच था तो इतना कुछ ऐसे बात करने वाला है भी नहीं मैच में। The players that were shining in the match were Memphis Depay, Cody Gakpo और Frankie De Jong. They were just shining. Overall, they were the better team than Qatar, and we already knew that. I don't think we have much to talk about this match, but yeah, Netherlands qualify कर चुकी है and they are on first position for the round of 16. Now let's talk about the second match that was going on. Ecuador versus Senegal. My God, क्या atmosphere था उस मैच का। मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज बताता हूँ, अगर आपने कोई फुटबॉल मैच नहीं देखा है या फिर अभी देखना शुरू करना है, जस्ट वॉच दिस मैच। और इस मैच के अगर आप हाइलाइट्स भी देख लोगे तो यू विल सी के कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर बना रखा था सेनेगल के फैंस ने। वो लोग कॉन्टिन्यूसली प्लेइंग द मैलर्ड्स एंड इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। इट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग एज वेल। व्हाट डू यू हैव टू से? I think if we talk मैच के पर्सपेक्टिव से, I think the atmosphere could not have been better. I think Senegal got the lead पहले, उसके बाद इक्वाडोर इक्वलाइज्ड एंड इक्वाडोर के इक्वलाइजर सेनेगल का नेक्स्ट गोल जिससे उनको लीड मिली, उनमें कुछ ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं था। सो आई थिंक द एटमॉस्फेयर डिड हेल्प द प्लेयर्स टू पुश ऑन एंड गेट द विनर, जिससे सेनेगल हैव प्रोसीडेड टू द नॉकआउट स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड कप। हाउएवर आई वुड लव टू सी अ क्लैश बिटवीन सेनेगल एंड ब्राजील, कंसिडरिंग कि दोनों के फैंस क्या एटमॉस्फेयर बना देंगे उस मैच में। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एज अ एटमॉस्फेयर कभी क्लब फुटबॉल लेवल या इवन इंटरनेशनल फुटबॉल लेवल पे नहीं देखा। इवन आई वॉचेस वर्ल्ड कप इन अफ्रीका एंड रशिया, इवन आई थिंक इन इटली। आई थिंक दैट एटमॉस्फेयर वाज नोवेयर नियर जो आज सेनेगल ने किया। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टेस्टामेंट टू व्हाट फुटबॉल मीन्स टू देम। आई थिंक इन कंट्रीज के लिए इतना मटेरियलिस्टिक होना, दे आर नॉट वेरी मटेरियलिस्टिक। आई थिंक फुटबॉल एक ऐसी चीज है दैट ब्रिंग्स देम जॉय। सो आई थिंक दे आर वेरी पैशनेट फॉर इट। दे हैव अ ट्रू लव फॉर द स्पोर्ट। आई थिंक इट वाज वेरी एविडेंट टुडे। जिस हिसाब से वो बजा रहे थे ट्राइबल म्यूजिक, वो आई थिंक उनका ट्राइबल म्यूजिक ही था। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक। मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर गाइस, अगर आप प्लेबैक पे भी मैच देखोगे ना, यू विल हियर, और अभी आप ट्विटर पे भी जाके देख लो, इंडिया में सेनेगल ट्रेंडिंग है। दैट्स हाउ गुड द एटमॉस्फेयर वाज। या अगर आप लोग हाइलाइट्स देखते हो उस मैच की, इफ 3 या 4 मिनट की हाइलाइट्स हो, यू विल हियर द मैलर्ड्स गोइंग थ्रू इन द बैकग्राउंड। वो मैलर्ड कॉन्टिन्यूसली उन्होंने 90 मिनट्स तक बजाया है। तो दैट्स हाउ पैशनेट दे वर। ऐसा भी नहीं है कि उनकी टीम इस चीज को देख के परफॉर्म नहीं कर रही थी। दे परफॉर्म्ड एंड दे परफॉर्म्ड रियली गुड। सो Ismail Assar started for Senegal at 44th minute. It was a penalty. It's very difficult to stop Ismail Assar with a penalty. So he scored. The next goal, an equalizer for Ecuador, was scored in 67th minute by the Brighton midfielder Moises Caicedo. Of course, he's been a subject to transfer to major European clubs the upcoming January transfer window. So it was game on from here. And when the match got to a clash of 1-1, the
Fans started playing the mallets really hard, and when they needed a hero, Koulibaly stepped up and scored another goal for Senegal at 17th minute. Now Senegal is in front. And also, I think this was Koulibaly's first international goal in his 67 appearances for Senegal. Yeah, overall, if we speak, Pulkit, I think this was the best match. by far the best match and by far the best atmosphere. And I won't say best match, but best atmosphere, definitely best atmosphere. And yeah, अब इस ग्रुप में से तो मतलब ऐसे Netherlands और Senegal they are going to round of 16. Okay, so last match England versus Wales, USA versus Iran. Wales को अगर क्वालिफाई करना था तो उनको 4 गोल्स के डिफरेंस से इंग्लैंड को हराना था. इंस्टेड वो 3 गोल के डिफरेंस से आ रहे हैं. तो दैट्स प्रीटी क्लियर कि इंग्लैंड हैज गॉन थ्रू इनटू द सेकंड राउंड. लेट्स टॉक अबाउट दैट मैच. टोटली गैरेथ साउथगेट वाला परफॉर्मेंस था. पोजीशन टू इंग्लैंड के पास ही था. दे वर नॉट लेटिंग वेल्स प्ले and Wales even got a red card as well, so they already were weak. They got more weak after the red card. England scored 3 goals in the match. We will be talking about that later. Pulkit, how was the match? So I think Gareth Southgate को ये benefit है. Benefit तो क्या? I think Gareth Southgate has made the correct decision listening to the fans, because the fans were actually shouting. They were crying out for Phil Foden and Marcus Rashford to start. I think clearly England के पहले तो जो 2 goals थे वो Marcus Rashford और Phil Foden के through आए थे. I think listening to the fans did help Gareth Southgate. I'm actually shocked कि Gareth Southgate ने इस बार back 3 से back 4 पे switch किया, and that is actually paying out the dividends to England in this tournament, because अगर हम उनके matches देखें तो they have been quite prolific. आज उनके first match में भी they scored 6 against Iran. उसके बाद they drew with USA. USA अच्छी team है, you cannot complain about it. It was a valiant effort. आज देख लो, they scored 3 against Wales. So they are a very prolific team. Actually जो इंग्लैंड का attacking style है वो निकल के आ रहा है इस style of football में. They are actually going with a 4-2-3-1. What are your thoughts, Lakshya? Are you surprised to watch England switch to back 4 एक back 5 से? इंग्लैंड के पास स्ट्राइकिंग क्वालिटी है अपने स्क्वाड में. दे कैन यू नो स्टिंग टीम रियली वेल. सो देखो यार, मतलब ऐसे तुम्हें अपना बेस्ट जो गेम है वो बाहर निकालना पड़ेगा ना ऐसे स्टेज पे. जो तुम्हारे प्लस पॉइंट्स हैं यू हैव टू शो दैट. गैरेथ साउथगेट इज फाइनली लिसनिंग. काफी अच्छा अटैक आज इंग्लैंड ने शो करा, एंड दे शो दैट दे आर द डोमिनेंट वन इन दिस ग्रुप. व्हाट अ विक्ट्री फॉर देम. I just like to see these kind of performance, and I would love to see how England will perform against Senegal in the round of 16. So yeah, we have 3 goals to cover in this area. So Pulkit. Thanks Lakshya. So England का पहला गोल आया 50th मिनट में. It was a brilliant free kick. Marcus Rashford box के edge पे Phil Foden was fouled by Ben Davies, and a direct free kick from Marcus Rashford into the far right hand corner. No chance for the keeper. Qatar FIFA World Cup का सबसे पहला direct free kick goal goes to Marcus Rashford from Manchester United. Special shout out. Second goal comes after just 90 seconds. Phil Foden just took the ball and ran with it. There were defenders, but people can't stop Phil Foden. Man City, man. So he scored, and what a fine goal it was. England का third goal was also scored by Marcus Rashford. He is now the top scorer in the FIFA World Cup with 4 goals, assisted by Calvin Phillips. It was a brilliant through ball. Marcus Rashford latched himself to the ball and scored past the keeper. It was an easy finish in the end, making it 3-0 to the 3 lines. England have probably walked over this group. I think अगर इनका आज ये हार भी जाते या इनका ड्रॉ भी हो जाता तब भी ये qualified थे for the next round. So I think they were in a pretty good position. That helped them to settle down early on in the match and carry on the business. For the round of 16 they have Senegal. मुझे Senegal का जो आज का मैच का environment था वो उसके बाद I don't think Senegal have anything to worry about in the field, because they have a lot of people behind them, and we have seen कि England is a pressure में crush हो जाता है. तो let's see what will happen. या अगर environment की बात करें तो USA का जो crowd था, they have also maintained a quite a reputation in their crowd, and they were really loud as well. The USA versus Iran, it was 1-0. So what a electric match it was. Both teams were fighting out. थोड़ा मतलब ऐसे I think जो मैंने मतलब ऐसे notice करा पूरे मैच में throughout, USA ज़्यादा मतलब ऐसे कोशिश कर रही थी to win this match, because they knew that if they have to go to round of 16
they have to win this match. ईरान के लिए ड्रॉ भी fatal नहीं था. Iran started pushing the buttons at 70 minutes, so that was a failure for them, and USA just took the advantage of that. मैच में सिर्फ एक गोल हुआ. We will talk about that. Do you have to say anything about this match? I think Lakshay, you pretty much summed it up. ईरान के लिए ड्रॉ भी एक सस्टेनेबल रिजल्ट था. So they were always comfortable, never got out of their comfort zones. So USA from the very first whistle, वो उनका mindset था to attack. They were on the front foot from the offset. So I think USA always deserved this result. I think they have multiple attempts. 2-3 counter attacks तो ऐसे थे. They should have ended up in goal if it was not for the poor decision top third of the pitch. So I think it was a pretty deserving performance from USA considering ईरान में last के 9 मिनट के जो injury time था मुझे उसमें कोई urgency नहीं दिखी. I'm sorry to say. So guys, get yourself in the comment section below. आप बताइए आपको क्या लगता है कि ईरान equalizer deserve करते थे या was it a fair result for USA? Talking about the goals, इस मैच में सिर्फ एक गोल था as लक्ष्य already told us कि the match ended 1-0. The only breakthrough came in 38th minute. It was Christian Pulisic. The ball from a free kick was played onto the far right flank. It was headed in first time by Sergino Dest, the right back. Christian Pulisic ran at the far post, lashed himself onto the ball, scored into an empty net, giving USA the lead, a deserved lead I'll say, and USA are through to the next round. USA will be facing Netherlands. It will be quite a testament for them, but let's see. I think USA have that capability to upset, Big team. The big boys of European football this time. And मैंने सबसे पहली वीडियो में भी ये बोला था that I think that USA will do something good in this tournament. I have a very loud gut feeling, but I think USA will win against Netherlands. बहुत far-fetched deal है, but I think they will win. And they can win. They have that kind of team. I won't be surprised अगर USA pull off a result against Netherlands because they do have that capability. Young squad है, they are hungry. They want to see कि उनके talents, उनकी capabilities उनको कहाँ तक लेके जाती हैं. So it will always be a game for Netherlands because Netherlands are a team जिनको slow tempo अपनी pace पे मैच खेलना पसंद है. USA are a young explosive team, so it will be a match to watch definitely. So Group A and B are done with match day 3 and the standings are like this. We will not talk about the whole standings because अब जो है last matches हैं and जो दो टीमें qualify कर रही है round of 16 के we will tell you about them only. So Group A से जो टीम qualify हुई है वो अभी है Netherlands और Senegal. Group B में से जो दो teams round of 16 knockouts में जा रही हैं they are England and USA. Okay. So now let's talk about tomorrow's matches. First matches that we have at 8:30 p.m. First match is Tunisia versus France and the second one is Australia versus Denmark. I think Tunisia are already out of the World Cup. I think France will walk over. There's no chance. Australia, Denmark. It should be an easy match for Denmark. However, if Australia put up a fight, I think it will be a tough match. But if I have to give an edge, I'll still give it to Denmark. So Denmark के लिए जीतना जरूरी है. Australia का अगर draw भी हो तो भी कोई problem नहीं है. They're already through then. Okay. So the two matches that we have at 12:30. First is Poland versus Argentina and the second one is Saudi versus Mexico. Poland versus Argentina is going to be a very emotional match. Argentina have to win this match to go to the next round. It is compulsory for Argentina, a must win for Argentina if they want to go through to the round of 16 knockout. However, अभी जैसे कि recently news आई है थोड़ी देर पहले कि Lisandro Martinez will be unavailable for the Argentinians. So मुझे नहीं पता ये क्या है. If it is a coaching decision, it is a stupid coaching decision. Lisandro Martinez has to start for Argentina in any case. अगर मैं फिर भी edge देना चाहूँगा, I'll give it to Argentina, but it will be a tough match because Otamendi and Christian Romero plays. I think Robert Lewandowski will have the ability to exploit them. So for Saudi, it will be a very important match because अगर Saudi को next round में जाना है round of 16 में, they have to beat Mexico. But if Mexico wins, then it will not be beneficial for Mexico because Poland will end up the group with the difference of goals. They have to win by a goal difference of 3 if Mexico have to go through. So yeah, these are the list for tomorrow's matches. So guys, get yourselves down in the comment section below. आप बताइए कि आप आज के मैचेस के बारे में क्या सोचते हैं. Also जो कल के मैचेस हैं जिनकी predictions हमने अभी करी हैं. Tell us what do you think about them. Do you really think Lisandro Martinez will big miss for Argentina? Yeah, they will easily cruise past. So alright guys, so that's all for this day's roundup and please follow us on Twitter. Our Instagram is not working right now,
but still follow us on Instagram as well, and subscribe and like our video on YouTube as well. Thank you for lending an ear. This is your host Lakshay. And this is your host Pulkit. Until next time, guys, take care.